Hi everyone. Today I really want everyone to watch this video, and it's for everyone. Like now, why I really want you to watch this video? You can speed at 1.25. You can speed it to 1.5, but watch this video. Okay. Now, when I say you watch this video, because I really want to stress on the thing that why you all should be practicing the prelims on the gold tide. Okay, it's very important, because if you don't know this, you won't get confident, because you would really find a big advertisement or some campaign going on for the gold tide, right? So the reason is we really work the entire day for the questions for the prelims. Now, why you all should be joining the gold tide? The first reason is that we don't do anything except the prelims examination, right? Second important thing is the source of our questions are well analyzed from the UPSC prelims paper, and the explanation are always from the authentic sources. Always. The third important thing is the current affairs section. The way we cover the newspapers, documents, articles, and frame questions for you for the prelims, that is very important, right? Because it's like current affairs from where you should be reading the current affairs. So any examiner who is framing your question, like from where they are framing their question, they are framing questions from either from the newspaper or environmental, some very good environment websites, UN websites, some important conferences, and some declaration or some kind of conferences which has resulted in to solve the problem of majority, like for you can say the child, the women, or the biodiversity. It has different sections, right? Now, today I'm going to show you some questions which are difficult. I'm not just picking all the questions for 25 prelims examination. Only those questions which were tough, difficult to find, but we have covered it and we have tried to provide you directly in your question set. Okay. Now, when you look the very first question, it talks about the declaration on the climate and the health. Okay. Now it says here that India refrained from signing this declaration, and this declaration is a binding. And third, it says if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. Okay. The problem is not with the third statement. The problem is the first and second. Now, the very question I asked you here, you see here, the COP28 presidency and WHO announced a declaration. The non-binding declaration marked the world first in the government and developing countries, including India, is against the declaration. You can get the first two directly from here and you can correct this question. Okay? Difficult नहीं है. But हाँ, the source, the topic ये जो है ना, ये difficult. Now, always remember that if you find anything related to the climate, health, and education, any framework of any country or any regional organization, it will be very important for your examination. We get this principle on that all the topics whenever throughout the year, 12 months, wherever we get this, we try to frame the questions and we try to give you. Okay. Now, the second important question and the very important, see, the explanation also given by us. This was the first question. The second question, if you see here, it was regarding the Article 6. Now, if you read here, the Article 6 of the Paris Agreement on the climate change is frequently discussed in the global discussion. It's a very simple and the not needed any specific knowledge. It's very easy, right? Second statement say that the Article 6 of the Paris Agreement sets out for the carbon markets. Third say the Article 6 of the Paris Agreement intends to promote the inter-country non-market strategies. Now, when you take the gold tide question, this was the gold tide question. Okay. The very second statement, you say both
it encompasses both the carbon market and the non-market strategies. Your statement 2 and statement 3 is covered here, and the first statement is very, very clear. Now, it's not only about the question. You see here the answer. The article 6 I have explained, and every article which talks about the article 6, and that is important, we have asked, and you see here it's a non-market strategies and our mechanism. It's covered in Paris Agreement article 6. देख रहे हैं आप? Okay. Now, third question, if you see about the Lokpal. Now, first, second, third, fourth, there were 4 different statements. And in your prelims examination, you have seen that the third question was the major roadblock. Okay. If you don't know this, you can't solve this question, or you can guess, right? So, any academy you just find who has covered this portion, 45 years of age, which talks about the eligibility of the chairperson of the member. We have covered it because we believe that whenever any act is there, any body is there, we go to the important, like the real document, and from there we cut the image and we paste it. So it's not only this much we have covered for the Lokpal. When you read the document for the Lokpal which we provide, it's totally pasted from the article from the guideline 1, and everything is covered required for your Lokpal question. The next question, if you see here, it talks about the AI Action Summit 2025. Now, first statement co-chaired with India, the event builds on the advantage. No, India itself becomes very, very important. सेकेंड स्टेटमेंट में ये जो है ना कि यूएस एंड यूके ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन, ये क्यों पूछा है? देयर शुड नॉट बी एनी रीजन टू आस्क यू दिस अनलेस दे हैव नॉट साइंड, है ना. ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना गोल्टाइड प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली, आप सीखने लगोगे. सपोज दे हैव साइंड इट, सो देयर वाज नो रीजन टू आस्क दिस स्टेटमेंट. दे हैव नॉट साइंड ओनली देन ऑल, और इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो blindly why you didn't follow the GOALTIDE. You see here, the Prime Minister of India visited France, and we have just explained the first statement which talks about the Park Summit and the Seoul Summit, and then we gave you here India is a signatory and US and UK didn't sign the declaration. We mentioned here, और it's आज भी उस document में mentioned है, we have not deleted from the website. Okay. Such questions you can expect. And देखो ये अभ्यास सेशन में भी कवर किया था. US and UK have not signed. So it all depends you have followed or not. The next question, if you see here, it talks about the minerals security partnership. Now this question again, this joined the mineral. This was the very important statement. You should be knowing or not knowing. This was important. Second statement अगर आप पढ़ोगे कि इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30, गलत है. ऑल 30 तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके. और जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, इट वाज इजी, यू कैन इजीली रीच द राइट आंसर. बट येस, इवन दिस स्टेटमेंट वाज मेड टफ. वी हैव कवर्ड दिस एंड इट्स लाइक अच्छे से कवर किया. ऐसे नहीं कि बिल्कुल नॉर्मली कवर किया है ना, कवर किया हमने. वी डिडंट एक्सपेक्ट ना कि इतना आसान ये पूछेंगे. अगर सपोज ये स्टेटमेंट मुश्किल होता तब भी a GOALTIDE student should not have done this wrong. Now when you move to the next question, the sixth, which of the following are the members of the NATO? Now everyone says that NATO सबने cover किया. We don't cover like सबने cover किया. You see, whenever we give the explanation, 32 members, same ऐसे ही हमने इमेज डाल के आपको दिया है. We have given this in your the अभ्यास, in your full and test one, in your daily quiz, everywhere we have given this image, and it was very, very important that you should have covered. हमने आपसे ये भी पूछा था कि all the Eastern European members are the members of NATO, ताकि आपको याद रहे, मैप याद रहे, है ना. Now when you see the next question, it talks about the राष्ट्रीय गोकुल मिशन. आप देखो ये majority of the lower producing indigenous animals, it was initiated to promote the indigenous cattle. ये सब कुछ, ये क्वेश्चन को आप देखोगे अगर, और जब एक्सप्लेनेशन पे जाओगे आपको पता चले. ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल सोर्स, वी हैव कवर्ड दिस एंड वी हैव गिवन यू. सो ये क्वेश्चंस जब हम आपसे पूछ रहे हैं लास्ट ईयर, तो इट्स लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये सारे,
और हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए थे। और 100 क्वेश्चंस का लिमिट होता है यूपीएससी में। अगर 500 क्वेश्चंस का लिमिट होता तो यू वुड हैव एक्सपेक्टेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ओके, अब आप देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे जो ब्रिक्स की बात करता है, एवरीवन हैज कवर्ड, यस, बट आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना था, इसका जो थीम था, एंड अगेन इट वाज अ पार्ट ऑफ योर गोल्टाइड, यू वुड हैव मार्क्ड इट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द नेचर रिस्टोरेशन लॉ, एनआरएल। आप देखो ये भी इजी था, ये मुश्किल नहीं था, ये भी हमने कवर किया था अच्छे से। टर्मरिक, एवरीवन लाइक पीआईबी से आया, यहां से आया, गोल्टाइड से आया, ठीक है, अच्छी बात है, पीआईबी में मेंशन है, बट नोबडी रीड्स पीआईबी लाइन बाय लाइन एवरी ईयर, दे रीड सम पर्टिकुलर बुक, दे सॉल्व देम। सो आप क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो हमारे साथ, एंड यू गॉट all the 3 statements. Third statement was not the part of your question, but yes, first and second was the part of your question and you have solved. Question number 11 आप देखोगे यहाँ पे, तो ये countries हैं, कौन से country resource rich? Take your अभ्यास session, I don't know the day number, there I have given you this image and I have tried to ask you this question as well. ये आपका द हिंदू में इमेज आया था, और द हिंदू इमेज से all 3 minerals are covered, है ना, ये आपको मैंने कवर करवाया था। अगर आपने नहीं किया है सॉल्व, और आप सोचते हो कि क्वेश्चंस नहीं आए, यू हैव नॉट फॉलोड गोल्टाइड। अगर आप सीरियसली फॉलो करते तो यू हैव, और ये सिर्फ करंट अफेयर्स कवरेज है, आई एम नॉट येट कवरिंग द हिस्ट्री पार्ट, द पॉलिटी पार्ट, द ज्योग्राफी, नो, ये सिर्फ करंट अफेयर्स हैं जो हम बिल्कुल सही कर सकते थे। और देयर वेर सम क्वेश्चंस वेयर डायरेक्टली, ऑल वेयर नॉट फ्रॉम द गोल्टाइड, बट क्वेश्चंस आप वहां पे देख सकते थे। यहां भी हमने BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के बारे में अच्छे से क्वेश्चंस फ्रेम किया यहाँ पे। फिर हमने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है, मुश्किल था ये, इट्स नॉट इजी, एंड आई ऑल्सो से आई डेंट कवर इट, बट हाँ हमने एक स्टेटमेंट इसका जो है फ्रॉम दिस आर्टिकल व्हेन आई कवर्ड द अभ्यास सेशन, हमने इसका कवर किया था, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, विच टॉक्स अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ द, तो सेकेंड स्टेटमेंट यू वुड हैव डन, बट फर्स्ट एंड थर्ड तो इट वॉज अ डिफिकल्ट वन, यू वुड हैव टू पिक, है ना, बट वी आर रीचिंग वेरी क्लोज, वी आर रीचिंग वेरी क्लोज बिकॉज द सोर्स इज वेरी ऑथेंटिक। INSTC सबने किया होगा कवर। देन अगर आप ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, जब हमने इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी तो हमने थर्ड स्टेटमेंट पूछा था, द इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन इथेनॉल प्रोडक्शन, और एक्सप्लेनेशन में दिया था ब्राजील के बारे में। सो अगेन इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन भी सही था। एंड देन वी गॉट दिस क्वेश्चन बिम्स्टेक, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एंड डिफिकल्ट इज ओनली द फोर्थ स्टेटमेंट, बिकॉज फर्स्ट और बी तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, बट जब फोर्थ स्टेटमेंट का प्रॉब्लम आया था इट, और 2023 में मैंने ये भी कवर किया था, बट आई थॉट ऑफ कि इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, एंड दिस ईयर आई मिस्ड, और ये आपसे पूछा गया। सो इट्स नॉट लाइक इट इज नॉट अंडर माई रीच और इट इज बियॉन्ड माई रीच, बट येस आई हैव थिंक ऑफ दीज क्वेश्चंस एज वेल दिस ईयर, और अब कुछ भी मिस नहीं करने वाला हूँ। ओके, then we have okay, so we have this much questions right now. So आपने देखा यहाँ पे कि it's beginning, we have done the beginning with the article 6, then we have the declaration on the poverty. All these questions were not very easy. We have mineral security partnership, then इतने आपसे 12 to 15 questions of the current affairs directly came from the goaltide. ये सिर्फ basic question की मैं बात कर रहा हूँ, it's not about the entire paper. अगर आप 12 to 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड 25 to 30 मार्क्स यहाँ से ले आते हैं, तो इट्स नॉट द पाथ डिफिकल्ट अहेड। आप आराम से पॉलिटी और हिस्ट्री करके इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते थे, है ना। तो वी आर इन द डायरेक्शन दैट वी हैव लर्न समथिंग, दैट हाउ यूपीएससी कैन गो इन द मोर डेप्थ, एंड देन दिस ईयर वी आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। आप आराम से ज्वाइन करो, आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन you should join and start moving with us. Okay, thank you so much. If you have any queries, you can go to the website, you can contact, but I really want every single student who is like struggling with the prelims examination, please don't miss Goaltide. You have to join. Thank you so much.